Namaskar friends, welcome to Headlines of the Day. In this video, we are going to discuss major headlines of the Hindu. Or before we begin, I would say believe in yourself and know that there is something inside you that is greater than any obstacle. क्या खूब कहा गया है दोस्तों इसी कंटेक्स्ट में, इट्स नॉट द माउंटेन वी कंकर बट आवरसेल्फ। तो चलिए फिर इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वेरी प्रीमेच्योर टू कमेंट ऑन इंडिया गेटिंग यूएनएससी वीटो, जयशंकर। ये अवेलेबल है पेज नंबर 1 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इट्स मैंडेट, इंडिया इन यूएनएससी, चैलेंजेस फॉर इंडिया एट यूएनएससी एंड वे अहेड। तो सारे पॉइंट्स को हमारी वेबसाइट पे कवर किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहां से भी गो थ्रू कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स दिए गए हैं, राइट। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज सॉफ्ट पावर द न्यू रेस एवरी कंट्री वांट्स टू विन। ये अवेलेबल है पेज नंबर 8 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 effects of policies on India's interests. In this article, we have to know about soft power, how success in international sporting events boosts a nation's chances of attaining soft power. What are the various recommendations for the Indian government to increase the country's sporting performance and soft power? तो बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया दोस्तों। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सॉफ्ट पावर। इट इज द पावर ऑफ अट्रैक्शन थ्रू कल्चर, political ideas and policies rather than coercion that military hard power exhibits, right? What is the importance of soft power in present scenario? This is now being reflected in increased interest, especially by smaller nations in the world, in investing more and doing well in elite sports, as it is thought that success in international sporting events boosts nations' chances of attaining soft power, right? Our next important headline is ग्राउंड प्लान फॉर इंडियाज रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म। ये अवेलेबल है पेज नंबर 8 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द की टेकअवेज ऑफ द 77th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इंडियाज क्वेस्ट फॉर अ रिफॉर्म ऑफ यूएन, its relevance for India, India's roadmap for multilateral diplomacy and what lies ahead. So recently, Indian External Affairs Minister's visit to United States has set a stage for an expansive range of bilateral and multilateral diplomacy by India. India calls for a reformed multilateralism through which United Nations Security Council should reform itself into more inclusive organization representing the contemporary realities of today. India calls for this structural overhaul of global multilateral institutions, incorporates institutional accountability and a wider representation of the developing countries. Our next important headline is India Inc. needs a neurodiverse workplace. ये अवेलेबल है पेज नंबर 9 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 ह्यूमन रिसोर्स सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट neurodiversity, benefits of embracing neurodiversity in organization and way ahead for India. First, we have to understand what is neurodiversity. Neurodiversity in the workplace refers to people with neurodivergent conditions such as attention deficit, hyperactivity disorder, autism spectrum disorder, dyslexia, etc. Right? Harvard Health Publishing defines neurodiversity as a notion that every person interacts and experiences their surroundings differently. There is no right way of thinking, learning, and behaving. These differences should not be construed as a defect or disorders. अब बेनिफिट्स क्या हैं इसके? और organizations embracing neurodiversity enjoy competitive edge in several areas such as efficiency, creativity, and culture. बाकी other points के लिए you can go through this, right? Our next important headline is मिड डे मील रिलेटेड फूड पॉइजनिंग केसेस एट 6-year पीक। ये अवेलेबल है पेज नंबर 9 पे और ये रिलेटेड है वेलफेयर स्कीम सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो हिस्ट्री ऑफ मिड डे मील स्कीम, स्केल ऑफ द स्कीम, इंपैक्ट ऑफ द स्कीम, इश्यूज एसोसिएटेड विद द स्कीम एंड वे अहेड। तो इन सारे पॉइंट्स को लाइन बाय लाइन हमारी वेबसाइट पे कवर किया गया है, लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। अभी ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ मिड डे मील्स हैव रिसरफेस्ड इन लास्ट 90 days. Close to 120 students suffered from food poisoning across schools in Karnataka, Andhra Pradesh and Bihar. Next important headline is shifting monsoon patterns. ये available है पेज नंबर 10 पे और ये related है पेपर 1 geography section से। In this article we have to know about monsoon withdrawal. When does the monsoon withdraw? Are monsoon patterns changing? तो ये सारे पॉइंट्स हमारी वेबसाइट पे कई बार कवर किए जा चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहां से भी गो थ्रू कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। Our next important headline is when are the new ICC rules coming into play? ये अवेलेबल है पेज नंबर 10 पे और ये रिलेटेड है miscellaneous सेक्शन से। In this article we have to know about the key changes in the ICC rules. अभी क्या है क्यों न्यूज में? क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज कम अप विद द होस्ट ऑफ चेंजेस इन द रूल्स ऑन प्लेइंग कंडीशंस ऑफ क्रिकेट। द चेंजेस विल कम इनटू इफेक्ट ऑन October 1st। कुछ चेंजेस यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, आप गो थ्रू कर लीजिएगा।
Our next important headline is non-oil exports to UAE up to 14% after trade deal surged 3% globally. ये अवेलेबल है पेज नंबर 12 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से और पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन से भी ये रिलेटेड है. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट इंडियाज एक्सपोर्ट्स UAE एंड इंडिया UAE कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट. तो इस एग्रीमेंट को हमारी वेबसाइट पे कवर किया गया है, लिंक अवेलेबल करा दिया गया डिस्क्रिप्शन में. न्यूज में भी क्यों है? क्योंकि इंडियाज नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स टू UAE हैव ग्रोन 14% between June and August, and India's global non-petroleum exports during the same period grew by just 3% on a year-on-year basis. Our next and last important headline is Election Commission to push for internal democracy in parties. ये अवेलेबल है पेज नंबर 12 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 Polity and Governance से. In this article we have to know why there is a need for democracy in political parties, challenges and way forward. तो अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन इज लाइकली टू टेक अप द इशू ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज. इलेक्शन कमीशन वुड नर्ज पॉलिटिकल पार्टीज to follow the internal democracy commitments. However, election commission does not have the power to deregister parties that fail to comply with the rules. तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही. Thanks for listening. For regular updates, you can follow us on various social media platforms.